Hi. So let's look at the companies जिसके रिजल्ट नेक्स्ट वीक पोस्ट होने वाली है. सो फेडरल बैंक बिफोर द रिजल्ट्स यहाँ पे बहुत अच्छी एक मूव आई है. गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली द लेवल्स ऑफ 142 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. सो राइट नाउ यू कैन एक्सपेक्ट सम 3-4 रुपीज़ मूव. डेल्टा कॉप इसके रिजल्ट भी 17th को आने वाली है. एंड वी कैन सी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डेल्टा कॉप इन आवर प्रीवियस वीडियो जो आपको अपर राइट हैंड कॉर्नर में आई बटन पे क्लिक करने से मिल जाएगी. ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इट सीम्स लाइक इट्स फेसिंग सम रेजिस्टेंस राउंड अबाउट एट levels of 470 480, and going forward yeah, it can correct again towards the levels of 440 in the short to medium term. ICICI GI, and this is also going to post its results on 17th. So we have both of these two companies, Prudential and Lombard. So we are going to keep a track on this one going forward. This has always been 1200 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट, 1200 1220 इस लेवल्स पे हमेशा उसको सपोर्ट मिल गया. सो गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू ट्रैक इफ इट्स कोई अगर यहाँ पे अगर कोई ट्रेड बन सकती है कि नहीं. ऑन नेक्स्ट डे वी हैव OFSS, एंड दिस इज डेफिनेटली ऑल्सो फेसिंग अ रेजिस्टेंस राउंड अबाउट एट 3100 लेवल्स, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट हैज़ अ सपोर्ट एट 3000 लेवल्स. सो इसी दायरे में, इसी स्मॉल रेंज में इट हैज़ बीन ट्रेडिंग सिंस लॉन्ग. नाउ लेट्स सी if it is able to break past this particular band. IndusInd Bank is going to post its results on 18th, and going forward I can expect levels of 1260 coming before that. So from here there should be a good trade opportunity. Persistent ये भी अपनी एक IT कंपनी की रिजल्ट 18th को आने वाली है, लेकिन ये वही है 4100 से 3800 इसी नैरो रेंज ऑफ 300 पॉइंट्स इसमें ही है. And we have to see how this goes. Polycab also is there's not much, but we can be sure of कि the levels of 2750 will act like resistance for now, and going forward it can again consolidate within this particular range. एशियन पेंट एक बहुत अच्छी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2900 में उसको एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है, एंड दिस विल बी वन ऑफ द ऑल्सो ट्रेड्स विच आई विल बी ट्रैकिंग डेफिनेटली फॉर नेक्स्ट मंडे, दैट्स ऑन 16th. और गोइंग फॉरवर्ड इन 1 or 2 days, एज यू कैन सी द रिजल्ट इज ऑन 19th, आई एक्सपेक्ट द लेवल्स ऑफ 3000 टू बी कमिंग सून. सो 100 रुपये का बहुत अच्छा ट्रेड हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. हेवल्स is the same thing. Havels is trying to face 1200 means कोई resistance face हो रही है. If it is able to move past the levels of 1200 1220, then going forward we can expect another good move in Havels. Havels की भी रिजल्ट 19th को आने वाली है. PVR भी अपनी रिजल्ट 19th को देगी, और यहाँ पे हमने ये ट्रेड लिया था, एंड फ्रॉम दैट डे वी गॉट अ गुड मूव टूवर्ड्स 1760-80 levels, and I have always been tweeting about this one. So going forward now this can enter into a consolidating range जहाँ पे वो 1700 पे उसकी सपोर्ट होगी, और going forward definitely the levels of 1820 is definitely a resistance for PVR. Emphasis ये भी एक IT कंपनी है जो अपनी रिजल्ट्स देने वाली है. गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू सी इफ इट इज एबल टू गो टू द लेवल्स ऑफ 2100. वहाँ पे उसकी एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है. राइट नाउ इज ट्रेडिंग राउंड अबाउट एट 2020 लेवल्स. कैनफिन होम इसकी भी रिजल्ट आने वाली है ऑन 19th, एंड हियर वी कैन सी दैट ये बहुत ही 540 या 560 के बीच में ही है. ऐसा कुछ जब तक कुछ अच्छा सेटअप नहीं होता है इसमें ज़्यादा कुछ ट्रेड करने के लिए है नहीं. AU बैंक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये 620 एंड 600 दिस इज एक्टेड लाइक अ सपोर्ट इन अर्लियर इंस्टेंसेस. अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देती है देन डेफिनेटली इट कैन टोटली करेक्ट टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 560. एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी अपनी रिजल्ट एक्चुअली नेक्स्ट वीक आप देख सकते हो. एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान लीवर, PVR, सो देयर आर लॉट ऑफ गुड ट्रेडेबल कंपनीज. इसमें आप ट्रेड करके आप बहुत इजीली आप ट्रेड कर सकते हो. एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर इज ऑल्सो trading in a very small range right now, so let's see if it is able to move past this range of 2650 levels. LTTS इसमें breakdown आई है before the result, ये भी अपनी 19th. so on 19th 18th 19th in just 2-3 days you have Persistent, Emphasis, LTTS, so many different OFSS, so many different IT companies who are going to post a result. India Mart, I think going forward this is a very typical structure कि अगर ये 4550 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे पाए तो वेल एंड गुड, एल्स इट कैन गो टुवर्ड्स दैट एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट करेक्टिंग. सो इंडिया मार्ट की भी रिजल्ट 19th को आने वाली है. Coforge is also going to come on 20th, and here we can see that Coforge has been trading between broader range of 3800 and 4100. इसी range के बीच में है. So it's getting some support at 3800, and then again it's facing some resistance at 4100.
And last company which we want to discuss is, okay, IEX is also coming in, Petronet is also going to come in. So IEX going forward, 200 is definitely, sorry, 150 is definitely a big psychological resistance, and right now is trading around about at 144-45 levels. Definitely I think going forward it will try to go towards the levels of 150. HDFC Life is also going to post its result, and theoretically SBI Life is now trading very near to its all-time high. So basically this whole sector is looking good. So HDFC Life is also going to post its result on 20th, and here you can see that maybe this is definitely 620 is a strong resistance, and right now is trading around about at 608, 606 levels. So going forward we can also expect some trade coming out of this particular one, and then we are going to take the trade according to the setup. Bandhan Bank, it is consolidating between the levels of 225 and 250 to 55. ये small range में ये consolidate कर रही है. So let's see what happens. JSW Steel is also trading near its 52 week high. So JSW Steel में 780 is a strong resistance, and we can see that there is a support round about at 730. इसी range के अंदर है, and going forward I can expect अगर this structure normally means that there is going to be a very good downfall, especially between the level below the levels of 750. अगर ये 750 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट की, so definitely it can correct towards the levels of 720. So JSW Steel should also be in our radar. RBL Bank is also going to give us a result. So from the looks of it, अगर ये 180 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, so the chances of bull taking over is very limited. And LTIM, this is also one of the IT companies. लास्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बुलिश यहाँ पे फॉर्म हुई है. हमें देखना है कि ये लेवल्स ऑफ 440 अगर इसको ब्रीच कर पाए. So tomorrow going forward I will definitely in the very first 5 minutes I will have a quick look of how Coforge, LTIM, these two companies in the IT sector are moving, because from the chart setup it looks like we can get something. And also on the top of that we also have Asian Paint, which we just saw. So ये भी एक बहुत interesting company हो सकती है on the long side. Atul is also going to come on 20th. Reliance is going to come on 20th. So this is actually good. हमने Reliance पे एक ट्रेड लिया था जिसमें मैंने ट्वीट भी किया था during market hours. So we were able to catch from this day onwards. Yeah, so from this day onwards we were able to catch this whole move and again this whole move. Going forward 2500 के ऊपर closing बहुत ही interesting होगी for Reliance to carry not only Reliance but also the whole market. So that's all folks. We just did a very quick analysis of all the results which are going to come between 16th to 20th. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Coforge, Mphasis, ये दोनों में अच्छी structures हुई हैं. हमें देखना इसका follow up होता है कि नहीं. LTTS में breakdown है. Definitely this is not an interesting setup for us. और वैसे भी हिंदुस्तान यूनिलीवर and together with that also एशियन पेंट, ये दोनों चार्ट सेटअप्स भी मुझे अच्छी लगती हैं. गोइंग फॉरवर्ड वी विल सी एट द एंड ऑफ 1 or 2 days ऑफ हाउ दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक. सो कल के लिए सिर्फ फेडरल बैंक ही है, एंड फेडरल बैंक एज वी डिस्कस 142 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड राइट नाउ इज ट्रेडिंग बिलो द लेवल्स ऑफ 139. थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग. होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू. बाय बाय. हैव अ नाइस इवनिंग.